अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाय लो सेल हाई के साथ मैं हूँ ज़िया अब्बास और आज के हमारे एपिसोड में बारबरा लॉलर होगी जो आपके साथ बहुत ही एक इनसाइड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेगी और वहाँ से आपको रियल एस्टेट के मार्केट में पता लगेगा कि क्या हो रहा है। और हमारे हाइलाइट्स में सबसे पहले बारबरा लॉलर होगी, उसके बाद शहजाद सदीकी के साथ हमारी बात होगी लॉ फर्म से, एंड देन मैं ख़ुद आपको एक ट्रायंगल समझाने की कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टर, ट्रू एंड यूज़र और बिल्डर के बीच में ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। और एंड में हमारे साथ होगी लीसा टू गिव यू अ टिप टू बाय लो एंड सेल हाई। हम चलते हैं बारबरा लॉलर की तरफ, जस्ट स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बारबरा लॉलर है, downtown, amazing weather, amazing people, amazing lady. Barbara, how are you? I'm really good, Zia. Yeah, thank you so much. You're welcome. It's a great weather, right? Oh, it's wonderful. Yes, and wonderful. And how about economy? I guess it's a great economy as well. There's a lot going on, and the condominium market is really exciting at the moment. In fact, it's really interesting what's happening, but the eyes of the world are starting to really focus on our condominium market. I know you're going to share something, yes, but let me interrupt you. Yes. You have a news for viewers about this one of the wealthiest investor around the globe, and they picked Toronto to build. Yes, they certainly did. Yeah. They bought a fabulous location in the entertainment district, and they are in fact a Fortune Global 500 company. Wonderful. And they're the #1 developer in China, and it is really exciting for us that they have chosen to invest in Toronto. It's exciting news for Yeah. Canada as well as for Toronto too. Yes. And as well as for you guys. And they have built 4 of the tallest 10 residential towers in the world. Wow. Yes. Wow. This is a fabulous builder. We're very excited. Wonderful. So recently Bank of Canada decided not to increase the rate. What you say about that? Well, I think we all saw that one coming, and certainly we are trying to increase our economy, getting people to buy real estate. Money is cheap. You can borrow at a phenomenal rate. A 5-year mortgage rate right now is the thing to do. Lock in, get the benefit of the low rates, and buy real estate and take advantage of this money that's available at such low rates. What you say to the new purchasers, like how they can take an advantage of this low rate? Well, many of our developers offer a capped rate program where they will cap the rate and hold the rate for 36 months, and then they'll get the benefit of that rate. If the rates go up, there'll be a small adjustment. So I think that that's a very wise thing to always check if your developer is offering a capped rate program. Why this condo market all of a sudden in the last 2 to 3 months jumped and brought a lot of interest among the investor community as of last quarter of 2014? I think the investor interest has grown in the last little while because we have been offering efficient small floor plans that are very affordable. But what's interesting is that we have started to see families moving into condominiums for the first time, and they're moving in by the hundreds now. Yeah. But I firmly believe this will grow into the thousands. And because of that, I would say to our investors, start looking at larger suites, because there will be a demand for family-size suites in the coming future. As the city is also putting that 10% of the building must be a larger unit. I guess the trend they are picking, that is towards the right destination. Is that not true? I would absolutely say that they're right on the money.
And the future is in condominiums. I mean, 10 years ago we were legislated to grow up and not out, and we're doing that. Yeah. But we now have to grow up in a sense in terms of what we're offering to the investor and to the end user. And certainly if families are going to live in our condominiums, it's very important that we offer larger suites. And my personal opinion is instead of pushing too much of a young crowd in downtown, we should accommodate families as well. And I totally agree with you. Yeah, I think it's very important. I mean, we want to be able to take care of everybody. And with the small, efficient, affordable floor plans, we can take care of the first-time buyers. We can take care then of the first-time investor. But for the more mature investor, I would say the future is in larger suites, and keep an eye on the fact that larger family groups are going to want to move in. And then accommodate them in downtown Toronto, right? Absolutely. People want to be where the jobs are, where the transit is, where the culture is, where, you know, a walk score of 100 is so possible in downtown Toronto. Of course. My last question is, where the trend is going? Where do you see real estate in the last quarter? I think right now we're on track to the second strongest year in our history. We may even set a new record this year. Really? Really powerful, amazing year, very resilient activity in our real estate market. And our real estate industry is responsible for so many jobs, for so much contribution to the economy. It's quite an amazing thing, and I think everybody understands real estate as an investment. And I believe action speaks by itself. The last project, which was about 3 weeks ago, the returns, and in a short period of time that project did so well, it's in a great example where the Toronto market is going on. Oh, absolutely. This fall, we have had several locations in the GTA that have sold out. Wonderful. Sold out. Barbara, thank you very much for your insider. We'll keep continuing the upcoming episodes. Thank you very much for your time. Thank you, Zia. नाज़रीन, आपने देखा जो एनर्जी बारबरा के जेस्चर में है, वो डेफिनेटली बड़े एक्सपीरियंस के बाद बारबरा इज़ टेलिंग अस कि वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का टोरंटो का पिक करना, उसमें इंटरवीन करना, आके बिल्ड करना, दीज आर ऑल अबाउट द पॉजिटिव एलिमेंट्स वी आर गेटिंग इन फेवर ऑफ टोरंटो। यहाँ से हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जस्ट स्टे विद मी। Be a part of something big. Welcome to the Canary District. 35 acres at your doorstep in Toronto's downtown east. Transit, dining, shopping, spectacular amenities. Introducing Canary Park Condominiums. Don't miss our grand opening special. Own for just $1,000 a month at Canary Park Condos. This is Toronto's next big thing. Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best.
Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. वेलकम बैक नाजरीन। बाई लो के साथ इस वक्त शहजाद हमारे साथ रेडी है और इनसे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। शहजाद का ताल्लुक़ जो है वो इब्राहिम्स LLP से है, तो इनसे थोड़ी हम सवालात करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम Zia, how are you? Thank you very much for joining us. Thank you for having me. Thank you. And a lot of people know that Shahzad is a lawyer, but which area, like what are your strong areas, like your expertise being a lawyer? Well, we primarily, I would say, serve the entrepreneur, both in Toronto and the global community. And that means that we serve people from the startup to the exit and everything in between. There's a great quote by Henry Kravis, who's a private equity buyout guy, who says, the definition of an entrepreneur is somebody without a safety net. But what we try and do for our clients is to put a safety net in place for them whenever they're doing a deal. When you talk about entrepreneur, are you talking about real estate entrepreneur as well? Yes, we service everybody from, let's say, the mom and pop shop to the successful entrepreneur who's made a lot of money, let's say in IT or medical technology, and then we provide services to them on the real estate side when they make an investment. Okay, and especially as you're talking about real estate, in real estate pre-construction, basically what these investors does, they leverage themselves into an intangible investment. Right. And the maturity date might be 3 to 4 years from now. How you can protect them as their lawyer? I'd say we can protect them in 3 ways. The very first is with an assignment clause. So if they decide they don't actually want to close the deal and go ahead with it and just want to make a profit before the deal closes, they could put an assignment clause in place. Very often they can do that with an agent who's got a lot of contacts with the builders, such as yourself. So that's one way of doing it. Another way is to basically put into place a rental agreement with the builder. Once again, builders don't like putting these into place. So you can actually have a builder allow you to rent in between the period where you have an occupancy to the final closing, which, as I said, is generally not allowed. And once again, if you have a good agent in place, they can help you do that. What about capping these levies? Yes, so you can put in protections on the development levy charges, the closing costs. That could also include an issue like HST. HST is an important issue to deal with. For a lot of entrepreneurs who are not intending to live in the property, they could pay the HST up front, and then we can help them recover that after the closing. I would like to thank you. Thank you very much for your time, and definitely we'll continue next time. All right, thank you, Zia. Always a pleasure. Thank you, Shahzad. नाज़रीन, आपने देखा शहजाद ने बहुत अच्छी बात की कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेफ्टी उसी वक्त सेफ्टी है जब आप उसको एक्ट करें उस टाइम फ्रेम में। बाद में अगर आप एक्ट करेंगे इट विल बी टू लेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ, अच्छे रिटर्न के साथ यू ऑलवेज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ से हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अपने एंड से दूँगा। जस्ट स्टे विद मी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स की इम्पोर्टेंस की, कि इन्वेस्टर का जो रोल है रियल एस्टेट में क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सो होपफुली बाय एंड ऑफ दिस सेशन यू मे गेट सम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट, इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वेस्टर्स में आप ये देखें कि अगर मैं एक यहाँ आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके दूँ, ऊपर है बिल्डर, यहाँ पर है आपका इन्वेस्टर,
और यहाँ आप देखें तो आपका एंड यूज़र होगा। और जर्नी यहाँ से आएगी। बिल्डर का जो टारगेट ऑडियंस है वो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर का जो टारगेट ऑडियंस है वो ट्रू एंड यूज़र है। इस पूरे साइकिल को गुजारने में 3 to 4 ईयर्स लगते हैं। ये जो 3 से 4 साल का गैप है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को सूट करता है। इन्वेस्टर को सूट कैसे करता है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप देखें, ये एक प्लेग्राउंड है, राइट? ये एक प्लेग्राउंड है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टर जो है वो प्ले कर रहा है। और ये इन्वेस्टर कैसे प्ले कर रहा है? एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ ऑल द वे, या 2014 की एग्ज़ाम्पल ले लें, 15 है, 16 है एंड 2017। तो ये आपका 2015 और ये आपका 2016। से एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और 2014 में उसकी प्री कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो रही है, तो बिल्डर लॉन्च के वक्त जब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी लेके मार्केट में आती है, तो उसका जो मेन ऑडियंस है या बायर है वो मोस्टली इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं। मैं ये कहूँगा ऑलमोस्ट 80-20 के रेशो से कि 80% इन्वेस्टर्स होते हैं और 20% जो है वो ट्रू एंड यूज़र्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टर ने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उसे ऑलमोस्ट 15, 16, 17 तक बैठना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो 3 से 4 साल का गैप है, ये ट्रू एंड यूज़र इसको विजुअलाइज नहीं कर सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसकी वजह ये है, देखें एग्जांपल क्या है कि एक इन्वेस्टर ने फ़र्ज़ करें आज एक फ्लोर प्लान ख़रीदा, ठीक है, और इस फ्लोर प्लान में जो है उसके पास कुछ नहीं है माँ सिवाय पेपर टाइटल के। तो आज अगर 2014 में इसने इन्वेस्ट किया है तो ये जाके उसको 2017 में टेंजिबल फॉर्म में ये बिल्डिंग उसे मिलेगी, राइट? तो अगर आप देखें तो इसके अंदर अब ये अपने टेंजिबल फॉर्म में आया। टेंजिबल फॉर्म में आने के बाद अब ट्रू एंड यूज़र को क्या चीज़ें नज़र आ रही है? नंबर 1, उसे स्पेसिंग नज़र आ रही है, उसे व्यू नज़र आ रहा है, उसे पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। बेस्ड ऑन दोज एलिमेंट्स फिर वो अपना माइंड बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ ट्रू एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो क्या है? नंबर 1, जो एंड यूज़र होता है वो अपने आप को 3 से 4 साल के लिए लेवरेज नहीं करता। सो इट मीन्स नो लेवरेज। नंबर 2, शायद उनके पास 20% डिपॉजिट नहीं है टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, सो नो 20% डिपॉजिट। बल्कि वो एंड में आके जब टेंजिबल फॉर्म की सूरत में यूनिट्स असाइनमेंट्स में या रीसेल में रेडी हो तो वो आके अपने अच्छे से बीकन स्कोर के साथ, क्रेडिट के साथ शायद 5% पे क्वालिफाई करे। और दूसरी चीज़, उनको अपना यूनिट जो अपना रियल एस्टेट है वो अगले 3 से 4 महीने या 2 महीने में उनको मिलेगा। फिर तीसरी चीज़ ये है, दे don't believe on intangible investment। वो intangible investment पे बिलीव नहीं रखते, बल्कि वो tangible investment पे बिलीव रखते हैं। अब चूँकि एंड यूज़र एंड के लिए रेडी है, उनको हमने असाइनमेंट सेल करना है या वो असाइनमेंट के लिए अच्छे हैं या वो रीसेल के लिए अच्छे हैं, तो
तो पूरा का जो पूरा प्ले ग्राउंड है वो इस वक्त एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स चूँकि ये प्रैक्टिस ओवर द टाइम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहली प्रॉपर्टी ली, सेकंड प्रॉपर्टी ली, थर्ड प्रॉपर्टी ली, और प्रॉपर्टीज़ पे वो ये देख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जो भी मार्केट ट्रेंड है उस पर आ रही है 5% 6%, तो ये क्या पे कर रहे हैं डिपॉज़िट, सिर्फ 20% डिपॉज़िट पे कर रहे हैं अगले 18 महीने के लिए से अप्रॉक्स। और अगर प्रॉपर्टी को 3 साल लगे हैं तो 18 महीने के लिए, अगले 1.5 साल के लिए इनका डिपॉज़िट स्टक है। तो जो रिटर्न इनको पर एनम आ रहा है वो डबल फिगर्स में है। इसीलिए इन्वेस्टर का जो ओवरऑल फोकस है वो प्री कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा है, चूँकि कहीं और अगर ये अपने रिटर्न्स देखेंगे तो इतने हाई रेशो के साथ नहीं होंगे। अगर कहीं पे हो सकता है तो वो सिर्फ स्टॉक में हो सकता है, लेकिन स्टॉक में अगर आप प्ले करेंगे तो वो एक ऐसा प्ले ग्राउंड होगा जिसमें यू माइट लूज़ योर शर्ट। लेकिन रियल स्टेट ये है कि इसमें अगर मैं एक लेमैन एग्जांपल दूं आपको कि आज आपने एक शर्ट $10 का ख़रीदा विद द इंटेंशन टू सेल इट विद $15, लेकिन ये आपको शॉर्टी है, ये आपको पता है, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि नो मैटर व्हाट हैपन $10 में तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, वेयर द प्राइस फॉर दैट शर्ट माइट बी $0 one day when it comes to stock. तो रियल स्टेट इज़ अ प्लेस और इट्स अ एरिया दैट वन कैन प्ले, जो डेली बेसिस पे या पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, दे नो द नॉर्म ऑफ द रिटर्न्स। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक बहुत ही नया प्ले ग्राउंड है। इट्स इंटायरली अ ब्रांड न्यू पिच। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्टे करना होगा, थोड़ा से सिंगल्स लेने पड़ेंगे ताकि आप इस पिच के नॉर्म को समझें। उसके बाद जब आपको फुटबॉल नज़र आना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली देन फिर आपके चक्के भी लगेंगे, आप 4 रन्स भी बनाएंगे, 6 रन्स भी बनाएंगे। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझें। और आने वाले एपिसोड में यही कोशिश होगी कि इस तरह के कुछ सेशंस किए जाएं जिससे आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि इन्वेस्टमेंट होता किस तरह है। अब ये जो डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन है, ये टाइम के साथ साथ हम आपको समझाएंगे कि किस रूट पे जाना है, यानी कि आपने प्रॉपर्टीज़ को पिक कैसे करना है, AAA लोकेशंस क्या होते हैं, AA लोकेशंस क्या होते हैं, प्राइसिंग को किस तरह गेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में बात करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं अपनी ब्रेक की तरफ। जस्ट स्टे विद मी। Tribute Communities creates dream homes. What makes your Tribute special? My Tribute. It's a hip urban address that really says me. My Tribute. A new home where nature and design live in harmony. My Tribute. A place where growing up is fun. Where the best days of our lives come together. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. One name stands apart in the real estate world: Zia Abbas.
Refinance. It's not always about paying your existing debts or plan a vacation. There is so much you can do with the equity, which is sitting and doing nothing in your house. Call me to discuss your options. Hi, I'm Lisa, and this is your tip to buy low and sell high. Trust your realtor, know their track record. Ask them questions like how long they've been practicing and what their volume of transactions are. A very good indication of your realtor's experience is if they are trading real estate full-time, because if real estate is their side job, so is your transaction. A few short quotes that I find inspiring in the realm of real estate. The best investment on earth is earth. And finally, a personal favorite, landlords grow rich in their sleep. Back to you, Zia. नाज़रीन, आपने देखा हमारे प्रोग्राम में बारबरा लॉलर आई और उन्होंने किस तरह आपको एक्सप्लेन किया कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है टोरंटो में डेवलपमेंट का, आपने देखा कि जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। दैट इज़ अ रियली गुड key thing for Torontonians. दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि इस वक्त बॉटम लाइन पे है, जिससे रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी बूस्ट होगी। शहजाद ने आपको असाइनमेंट समझाने की कोशिश की और ये बताया कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ ओवर द टर्म ऑफ 3 years 4 years क्लोजिंग। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और मैंने चार्ट पे भी आपको यही समझाने की कोशिश की ट्राइडेल में कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो इन्वेस्टर का रोल है कि वो इस इकॉनमी में अपने आप को कैसे लाके लेवरेज करेंगे। और फिर लीसा से आपने टिप्स सुने हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। टाइम की कमी की वजह से मुझे इजाज़त चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।